Assalamu alaikum everyone. I'm Amar bin Salim from the Office of Advancement at LUMS, and I am glad to welcome you to our Knowledge Week for Syed Babar Ali School of Science and Engineering. It basically, again, is a week-long series that we are doing. It consists of different webcasts that we are doing for different MS and PhD programs offered at the School of Science and Engineering at LUMS. So today, our webcast is going to be about our MS and PhD programs in two different disciplines. It's going to be biology, and the other one is chemistry. And both of these programs are pursued at the School of Science and Engineering at LUMS. Tomorrow, inshallah, will be our webcast for two other programs, MS and PhD Physics and Mathematics. On Wednesday, inshallah, we'll cover electrical engineering, and we'll wrap this week up with our webcast for computer science. So Syed Babar Ali School of Science and Engineering, or SBASSE, basically offers state-of-the-art research and teaching facilities to fulfill its commitment towards multidisciplinary research and education. Now today, inshallah, we'll try to make most of this opportunity by interacting with our faculty members, our graduates, and our staff as well. And we will basically try and have your questions answered by them. We will try to engage in a very meaningful and a very fruitful conversation with them. In addition, we'll learn about the admission criteria to apply to these programs, the important dates that you must make a note of, and also, what are the career prospects once you graduate with these degrees? So, without delaying any further, I'm going to warmly welcome Dr. Rahman, Dr. Shahzad, Ms. Rida Ibrahim, and Ms. Zan Umar. Dr. Rahman is currently serving as a tenured associate professor in the Department of Chemistry and Chemical Engineering at our School of Science and Engineering. He is a member of the Departmental Graduate Programs Committee as well. Dr. Shahzad is an associate professor and convener of the Departmental Graduate Programs Committee at the Department of Biology at LUMS. Ms. Zan Umar is a current student of ours, and she is presently engaged in pursuing her PhD at the Department of Biology at LUMS. Ms. Rida Ibrahim is currently working as a lab instructor in the Department of Chemistry and Chemical Engineering, and she's also our MS Chemistry graduate as well. So my wholehearted gratitude to all of you for taking time out and being with us today for the benefit of our potential applicants. And Dr. Shahzad, you're here with us for half an hour, and so I'm going to make sure that most of the biology-related questions are put in front of you in this time. And I'll be starting with you. Could you please start with the introduction of these two programs, and also shed some light on the way we have structured both of them? Okay, so thank you very much, Amar, for the introduction and giving us this opportunity to reach common people to introduce our graduate program. So our biology graduate program, you can divide into two parts, MS program and PhD program. So MS program is further, it has two streams. The one is, we call it molecular and cell biology stream, which basically incorporates all state-of-the-art areas, for example, biochemistry, microbiology, cell biology, molecular biology. And then in parallel, for last couple of years, we have another stream, which is called bioinformatics. You know, the bioinformatics or computational biology is now an emerging area of biological sciences, basically the computational aspect of different subjects as well. In terms of PhD program, basically consists of kind of more, it's a more American model. We have like a theoretical coursework, then we have a comprehensive exams, and there is extensive research, so which is primarily based on extensive research. And there is a 8 faculty members, which are really accomplished, highly trained from international, American, and European universities. They have experience of several years working in best labs in the world. And they are working in areas which are really emerging and contemporary areas of science, biological sciences. I can give maybe few examples. For example, Dr. Amir Faisal, who is also the chair of biology department,
his area of research is cancer therapeutics, and possibly his lab is the only lab in Pakistan which is really working in discovery of new molecules or potential cancer drugs. Myself, when I came here after spending like 8-9 years at National Institutes of Health in USA, I established this biochemistry and structural biology lab. And I can just tell you, this is the only lab in Pakistan which is focusing on structural biology aspects related to viruses. We use biochemistry and structural biology tools to understand viral infections, to create knowledge related to vaccine research, to create knowledge and discover therapeutics against viruses. So all these different areas of science, these provide basically a wonderful opportunity for students, for PhD students to learn, to perform research and move forward in these different areas of research. Similarly, the MS program, which is not just classes, because when we look in terms of time, like half of the time, like 1 year, students, they have to learn not only just classes, but they have to spend a significant amount of time in laboratories to learn different modern biological techniques and scientific methodologies to answer really big questions. And while doing that, to answer those questions, they enhance their learning so that they can be an independent researcher when they move forward towards their career. And many of our students who graduated in MS, they ended up, they placed in really good universities for further higher education in the world. Bilkul, Dr. Siddharth, thank you very much for such a detailed explanation, such a detailed overview that you have given about both of our programs, MS Biology and the PhD level biology at LUMS. इंशाल्लाह मैं आपसे इस पे और भी बात करूंगा स्ट्रक्चरल बायोलॉजी का, जैसे आपने बताया कि we are the only ones who are engaged in active research with regards to establishing a lab in Pakistan. Career opportunities के बारे में थोड़ी देर में आपके पास दोबारा आऊंगा, but now I would like to start with Dr. Rahman. Dr. Rahman, thank you for being with us, and I would really appreciate if you could simply begin with the introduction of our MS and PhD level programs in chemistry. Dr. Rahman, kindly mic अगर आप unmute कर लें. जी, now you can hear me. जी. Thank you, Umar. Thank you very much for giving us the opportunity to present our programs. The Department of Chemistry and Chemical Engineering at SBA School of Sciences and Engineering at LUMS is currently offering 2 programs, MS in Chemistry and PhD in Chemistry. These are rigorous and designed to impart specialized professional and research-oriented training. Our programs offer exciting opportunities for the students to take advantage of conducive and thriving environment that we have developed over here to contribute effectively in the development of science. The department aspires to establish itself as an internationally recognized and globally competitive center for graduate teaching and research in the wide variety of chemical disciplines, which include nanosciences, materials, drug discovery, medicinal chemistry, catalysis, and so on. Students benefit from us in many ways, especially because of the excellent research facilities that we have. For example, we do have a 6 megahertz NMR, we have SEM, XRD, ICPS has been recently installed, we do have GCMS, HPLC, and so on, a range of instruments that are required for carrying out high quality research. The students have access to a globally competitive faculty, which has been trained in United States, UK, or Germany, and consists of outstanding group of scientists who have committed to pursuing and maintaining excellence in teaching and research. At LUMS, the students also benefit from the interdisciplinary approach. We work on no boundaries concept. So often you end up seeing that the faculty of chemistry is interacting with others and working on the collaborative projects where, for example, if I talk about myself, so my area is organic synthesis, and we are designing the compounds that can help overcome the multi-drug resistance in the cancer cells. And in that regard,
I have a strong collaboration with another colleague that Dr. Shahzad mentioned, Dr. Amir, to name him. Similarly, we also are very excited about the transdisciplinary spaces that are available across the LUMS, because these create unique environment for the students to participate in groundbreaking scientific work, solving intricate global challenges related to health, energy, environment, and industry. Besides working on cutting edge research, we are also very actively engaged and trying to develop the solutions for the industry. So we keep on interacting with them, and we try to, well, before COVID, we were regularly carrying out the placement of our students during the summer time as interns in various industries. So if you are passionate about chemistry and the related field, if you are hardworking, you are willing to commit 100% of your effort to learn and develop something new, then LUMS and Department of Chemistry and Chemical Engineering is the place for you to join and grow your career. बिल्कुल सही। मैं साथ साथ रिदा को देख रहा था, रिदा के चेहरे पे जो है मुस्कुराहट भी आती जा रही थी। मुझे लगता है कि एक उनको शायद खुशी हो रही थी कि जो जो बातें आप कह रहे हैं वो उन्होंने कर ली हैं और तभी वो ग्रेजुएट हुई हैं यहाँ से। रिदा, मैं आपके पास आता हूँ। एग्जैक्टली आपके पास आता हूँ क्वेश्चन के साथ, एंड थोड़ा सा इधर मैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव भी लेना चाहता हूँ आपसे। It was on research या फिर about the faculty, everything is so true, मतलब there is no exaggeration to it basically. Yeah, I totally understand and second that. बिल्कुल, मतलब जो भी बातें डॉक्टर शहजाद ने और डॉक्टर रहमान ने कही, they're far from exaggeration. This is the true story at LUMS, by the way. रिदा, आपसे क्वेश्चन मैं ये करना चाह रहा था कि आपका स्टूडेंट एक्सपीरियंस कैसा रहा है LUMS में, खास तौर से स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग में कितना प्रेशर होता था और कितना मजा आता था काम करने में? इंस्ट्रक्टर्स आपको जो है हर वक्त जो है एंगेज रखते थे? रिसर्च कैसी है? कुछ इन चीजों के बारे में काइंडली बताएं। I really enjoyed it. Pressure definitely है because the quality of the studies and research is really high. मगर जो approach है basically conceptual, and we do not have a specialization as in other universities. Masters में अक्सर you have a single specialization, तो आप काफी cut off हो जाते हो बाकी field से। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग सारा कुछ पढ़ रहे होते हैं और research का भी हमारा हर different areas से exposure हो रहा होता है, so you really get to explore a lot. तो उस लिहाज से आई वुड से कि ये वन ऑफ अ काइंड ही है इन पाकिस्तान। देयर आर वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज जो विदाउट स्पेशलाइजेशन एमएस करा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सही। और आपका मतलब बाकी स्टूडेंट एक्सपीरियंस आपका कैसा था? यहाँ पे आपके दोस्त बनाना आसान था या मुश्किल था? क्या आप दैट इज नॉट अ चैलेंज फॉर मी। और बाकी अगर एक्स्ट्रा करिकुलर्स और स्टूडेंट लाइफ के लिहाज से देखें तो दैट इज वेरी थ्राइविंग ऑब्वियसली एट LUMS टू। और अगर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आल्सो हैज अ सोसाइटी, केमिकल सोसाइटी, so that is also a very good place where we get to interact and organize conferences and things like that. So ये आप डॉक्टर शहजाद के प्रेशर में तो नहीं कह रही ना? नहीं ये भी बिल्कुल सही, ठीक है। थैंक यू रिदा। जैन, आपके पास आता हूँ। अक्सर हमसे क्वेश्चन से पूछते हैं कि जी व्हाट डू द पैनलिस्ट रियली लुक फॉर इन अ कैंडिडेट, और मैं पैनलिस्ट के पास जाऊंगा भी। और द रियली गुड थिंग अबाउट टुडेज पैनलिस्ट इज कि हमारे पास जो भी इस वक्त डॉक्टर शहजाद, डॉक्टर रहमान ग्रेजुएट कमेटीज में भी होते हैं, तो हम उनका भी इसमें व्यू लेंगे। लेकिन मैं एज एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव भी लेना चाह रहा था। यू आर परस्यूइंग योर PhD इन बायोलॉजी एट LUMS, तो एग्जैक्टली एक जो एक्सपीरियंस है वो कैसे मैटर करता है एक कैंडिडेट का? क्या देखते हैं? आपको क्या फील होता है कि जब आपने अपना इंटरव्यू दिया था, यहाँ पे आपने अप्लाई किया था LUMS में, तो आपके पैनलिस्ट ने क्या नोटिस किया था कि इनको क्यों एडमिशन दें? Amar, I think the most important thing is passion. The panelists and the interviewers are looking for that spark in you. वो आपसे सवाल ये नहीं पूछेंगे कि फलाने प्रोटीन का क्या नाम है, कोई रट्टे वाले सवाल नहीं होंगे। It'll be a problem-based interview. They'll give you a situation कि अगर आप एक साइंटिस्ट हैं, आप एक रिसर्चर हैं और आपके सामने एक ये सवाल आता है, तो आप उसको किस तरह टैकल करेंगे, आप क्या एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करेंगे। तो द थिंग, अगर आप आई एम अज्यूमिंग कि जो जितने लोग सुन रहे हैं अगर वो मास्टर्स और PhD के लिए अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं, तो सबसे पहला उनको अपने से सवाल ये पूछना चाहिए कि क्या उनके पास ये पैशन है टू परस्यू साइंस एज अ करियर, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका पैशन जिंदा है
So you will read papers, you will strive hard, you will put in the hours required, and you will generally do really well. लेकिन अगर आप सिर्फ एडमिशन इसलिए लेना चाह रहे हैं कि आपके पास एक डिग्री आ जाएगी, तो फिर probably LUMS is not the place for you, because we need people who are driven to get to an answer, जो कि आपने अपना रिसर्च क्वेश्चन जो आपने फ्रेम किया होता है, और उस केस में शायद सर्वाइव भी नहीं करेंगे, वो आप सर्वाइव भी नहीं करेंगे, आपको मजा भी नहीं आएगा, बिकॉज द ट्रूथ इज कि इट इज अ वेरी ग्रूलिंग, अ वेरी टफ, अ वेरी इंटेंसिव 2 years और 5 years, जितना भी आप MS या PhD करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पैशन, ड्राइव, विलिंगनेस टू पुट इन द एफर्ट एंड द आवर्स बहुत जरूरी है। और फिर जब आप इतना ज़्यादा टाइम लैब में गुजारते हैं तो आपके फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। इट्स अ वेरी फैमिली लाइक माहौल देयर। मेरा अंडरग्रेड भी यहाँ का है, मेरा मास्टर्स भी यहाँ का है, मेरी PhD भी अब यहाँ की है, तो इट्स मोर लाइक अ बिग फैमिली, जिसको अगर मैं डॉक्टर शहजाद के साथ PhD नहीं करी, लेकिन अगर मुझे कोई सवाल है, कोई मेरी एक्सपेरिमेंट में मसला है, तो इट्स एन ओपन डोर पॉलिसी। एनी स्टूडेंट कैन गो टू एनी प्रोफेसर, ask help for anything. I can go to Dr. Rahman and ask him for his input in chemistry. तो एक बहुत open system है. Exactly. Alhamdulillah. और मेरा ख्याल है this is one of the reasons that we have been able to thrive with regards to our research, with regards to our teaching, and whatever we have been successful in producing in Pakistan. कि हमारी open door policy है. Everybody from a teacher to a student, everybody is committed. I think मैं शायद audience को बता भी दूं कि जैसे ज़ैन ने अभी ये कहा भी है, मैं थोड़ा सा emphasize कर दूं इस बात पे कि what the panelists really look for is your commitment, is your passion, and how richly you can contribute to the overall classroom experience as well. आगे चलता हूँ, डॉक्टर शहजाद आपके पास आता हूँ फिर से. What educational backgrounds do we look for in our applicants? किस किस्म का applicant हमें चाहिए होता है? I think applicant तो we don't really care too much about the background कि कौन सी डिग्री है, as long as the candidate can pass our exam into का field जो related है, anyone is eligible. Only thing is she and convince us that he and she is passionate and he has a knowledge of science, they have passion for learning, so they are welcome. We really don't care about which degree they have. Any degree which is related to life science, it could be botany, it could be zoology, it could be microbiology, it could be molecular biology, it could be biochemistry. We welcome everyone as long as she is good in science. ओके और जहाँ पे डॉक्टर शहजाद आपने ये बात की, वहाँ मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एडमिशन क्राइटेरिया जो है हमारे MS प्रोग्राम का और PhD बायोलॉजी प्रोग्राम का भी अगर एक्सप्लेन कर दें खुद से. एडमिशन क्राइटेरिया सिंपली एक एडमिशन टेस्ट होता है, रिटन जो सब्जेक्ट टेस्ट होता है बायोलॉजी का. जनरली उसमें तो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है सिंपल होता है. बेसिक अंडरस्टैंड हम जज करते हैं जो कि मेन एरियाज हैं बायोलॉजी के, विच इज बेसिकली मॉलिक्यूलर, सेल बायोलॉजी, इन बायोकेमिस्ट्री, टू सम एक्सटेंट माइक्रोबायोलॉजी. इन 4 एरियाज के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी बेस पे एक टेस्ट, रिटन टेस्ट, एग्जाम, MCQs टाइप बनाया जाता है. तो उसको जो बच्चे पास करते हैं तो फिर उनका एक मेरिट बनता है. तो उसमें उस मेरिट में जो लोग आते हैं तो देन दे आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज. तो उसमें फिर एक सेकंड लेवल का आपका एक टेस्ट होता है जिसमें जो फैकल्टी का एक पैनल आपको जज करता है कि हाउ गुड यू आर इन दीज एरियाज ऑफ साइंस. तो बेसिकली यही दो हैं कि कुछ जो जनरल जो परसेप्शन है वो ये होती है कि आपका जो बैकग्राउंड है, आपने BS में क्या कितने मार्क्स थे, क्या थे, उनकी कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली होती है जो आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, लेकिन बहुत थोड़ी होती है. हम लोग जब इंटरव्यू करते हैं, हम जब उनका टेस्ट देखते हैं, तो अगर किसी ने बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छा स्कोर किया है इंटरव्यू में, वो बहुत इम्प्रेसिव था, तो वी रियली डोंट केयर कि इसका एकेडमिक बैकग्राउंड फिर क्या था. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर these two aspects, written exam and interviews. रिटन एग्जाम्स एंड इंटरव्यू, बिल्कुल ये 2 मेन एस्पेक्ट्स. MS के लिए भी और PhD के लिए भी. PhD का चूंकि थोड़ा लेवल हाई होता है तो उसमें जो इंटरव्यू होता है वो थोड़ा ज्यादा विगरस होता है. एग्जैक्टली, बिल्कुल.
डॉक्टर रहमान, फिर अब मैं आपके पास आता हूँ। करियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या होते हैं जब आप एक एमएस केमिस्ट्री के साथ या एक पीएचडी केमिस्ट्री के साथ ग्रेजुएट कर जाते हैं? क्या एक पीएचडी केमिस्ट्री जो है उसके करियर प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो एजुकेशन में ही होते हैं या इसके अलावा भी इसकी एप्लीकेशंस हैं? देखें, जनरली हमारी जो कोशिश होती है लम्स में वो ये होती है कि हम फ्यूचर लीडर्स अपनी फील्ड में प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। अब साइंस इतनी आगे चली गई हुई है कि जनरली मास्टर्स के बाद पीएचडी और पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक्स जो हैं, पोस्ट डॉक करना बड़ा इंपॉर्टेंट गिना जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, हमारे पास ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनके अपने फाइनेंशियल या फैमिली कंस्ट्रेंट्स हैं, देयर आर रीजंस जिनकी वजह से वो अपनी पर्टिकुलर लम्स की डिग्री के बियॉन्ड नहीं जाना चाहते। अदरवाइज जो हमारे पास बच्चे आते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि उन्हें इस तरह से ट्रेन करें कि बिफोर दे ग्रेजुएट दे सिक्योर देयर नेक्स्ट पोजीशन। सो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास मास्टर्स के बच्चे आ रहे हैं तो वी ट्राई कि उनको उनका एकेडमिक्स इस तरह की हो, उनकी ट्रेनिंग इस तरह की हो, उनको रिसर्च में आप इस तरह से करें, उनको राइटिंग एंड कम्युनिकेशन आप उनकी इस तरह से इंप्रूव करें कि बाय द टाइम दे ग्रेजुएट दे आर इन अ पोजीशन टू अप्लाई to foreign universities. We especially focus American institutions, and we are seeing the trend right now. Rida recently got admission offer from, I guess, Rochester. So, PhD के लिए भी यही है। PhD के केस में we try to make to train them in a way कि beyond their PhD they will have choice. Either they can go on and move beyond their current academic position into some sort of postdoc, or they can be independent academic leaders. They can join other universities across the country. बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक बात। थैंक यू डॉक्टर रहमान। रिदा, आपके पास आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, जैसे डॉक्टर रहमान ने बताया, you have secured admission at Rochester. Next on, what kind of opportunities did the alumni who graduated from MS Chemistry program secure? It's being asked by Irfan. तो अब आपके भी काफी सारे friends हैं जिन्होंने साथ आपके graduate किया होगा. Where do you see them now? So basically, a lot of them जो बाहर नहीं गए, वो they are involved in teaching at different institutes across Pakistan. So some have government jobs, कुछ जो है वो private sector में भी कर रहे हैं. A few of them are lab instructors here with me. जो बाहर PhDs के लिए गए हैं, they have gone to US mostly. कुछ की placements, एक की placement कतर में भी एक यूनिवर्सिटी में हुई है. He got a really good stipend for it. So basically ज़्यादा ट्रेंड और ज़्यादा फोकस भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स का यही होता है कि स्टूडेंट्स PhD के लिए जाएं, बिकॉज MS is not a terminal degree. There is a lot more to do, or you have the right platform for it at LUMS. You can go above and beyond just MS. So I think that is a really good career prospect for anyone joining MS program here at LUMS. बिल्कुल, certainly. As you have mentioned कि आपके जो friends हैं, they are established in multiple industries. They are established not only in government, in the private sector, even outside Pakistan as well. Some of them are pursuing their PhDs outside Pakistan. Most of them, as you have said, they've been successful in securing admissions in the US. बिल्कुल सही. I should add one thing over here. Dr. Rahman, I think the training in LUMS is unique in a way कि once our students graduate तो वो फिर दूसरी scholarships वगैरह के लिए कोशिश नहीं कर रहे होते. Like as Rida has graduated, so she has secured fully funded position in America. So she won't be relying on Higher Education Commission or any other funding authority to provide her scholarship or stipend to go abroad. They have been trained in a way that they are applying to American institutions, and those institutions are giving them admissions along with the stipend. So they are not dependent on anyone. This is a remarkable point. I mean, honestly, thank you very much for letting us know about that, Dr. Rahman. आप जैसे डॉक्टर रहमान ने बताया कि many of the students who complete their programs at LUMS वो अप्लाई नहीं करते किसी स्कॉलरशिप के लिए, वो सिर्फ एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं at different universities, and they are offered scholarships and stipends along with admission, certainly. And this is, I mean, this kind of is a testament to the quality of students, to the quality of researchers that we are producing through Syed Babar Ali School of Science and Engineering. Dr. Shahzad, मैं आपके पास आता हूँ. How can one finance this program? हमारा MS program और हमारा PhD biology program, इसको finance कैसे करेंगे? जो PhD program है वो तो fully funded है. So university not only spare their, there's no fee.
Okay, the university take care of your credit hours fees. There's no tuition fee. It's a free. In addition to that, every PhD student is provided around 50,000 per month scholarship for 4 years. Okay, and beyond 4 year, university has a commitment for 4 year scholarship, but if someone has to stay, if she cannot finish in 4 years, then we still have some other mechanism through grants. We try our best to cover their financial needs. Not only we provide the tuition fees, but also monthly stipends, so that, you know, the PhD level, we assume that the student or the candidate, he's sometimes they are married, they have financial responsibilities, and we have. I think this is the LUMS is the example in especially in life sciences. There is no other university in Pakistan, no place in Pakistan which is paying more than 20,000 scholarship to life sciences student. The LUMS is the only place where we have 50,000 per month scholarship for PhD students working in field of biology, chemistry, physics, in basic sciences. बिल्कुल सही. For MS program, of course, there is some tuition fee, but there are different other programs like financial aid program. There is some loan-based program that the student can, if they cannot afford to pay monthly fee, the tuition fee, they can ask for loan from university, which is very easy. They have to return in years, in installments after they graduated. So there are lots of opportunities. We have made sure that a good, talented student, if someone is talented, regardless his financial status, she should come to us, and we will take care of him, her. As we always say कि अगर आप committed हैं अपने cause के साथ, अगर आप committed हैं जो आप करना चाहते हैं, research के साथ committed हैं, so LUMS is going to make sure that financial hindrances are not there in your way. We are going to make sure that we support you in whatever way we possibly can. मैं एक चीज और बताना चाहूँ इस वक्त के right now we have 7 PhD programs that we are offering through our university LUMS. 6 of these programs are offered at Sayyid Babar Ali School of Science and Engineering. And again, जैसे Dr. Shahzad ने बताया कि पाकिस्तान में कोई ऐसी university probably नहीं है इस वक्त जो कि 20,000 rupees के stipend से ज़्यादा दे रही है. Not only is it a fully funded PhD biology, PhD chemistry program that we are letting you know of, it is also a program that comes with a stipend, and that stipend is 50,000 rupees per month for a period of 4 years. So that's how committed we are to making sure that we are producing the future researchers at LUMS. Amar, that also Dr. Rahman. That also tells the applicants that we are looking for the talented people. We are paying the money to train you guys, so we want to attract the best possible researchers and the students from around the country. Right on point, Dr. Rahman. बिल्कुल सही बात है. ये आपने बिल्कुल सही टाइम पे आपने मुझे ये बात कहने का मौका भी दिया और खुद भी एक्सप्लेन किया कि बिल्कुल जब हम ये चीज ऑफर करें, we expect the best researchers as well with that acumen present in them. अच्छा, मैं एक छोटा सा उसमें ऐड करना चाहता हूँ related to our PhD programs. जी डॉक्टर शहजाद. इस साल हमारा जो पहला बैच है PhD का, they graduated. The 4 people graduated, and I just want to tell you that 3 of those who just graduated in July this year, 3 of those, they got postdoctoral position in American universities, and they are already there. So that tells that how good they were trained. Exactly. I mean, that shows that. बिल्कुल सही. आपने डॉक्टर शहजाद आपने बिल्कुल सही बताया. Thank you so much, Dr. Shahzad, for being with us. I know आपने एक class भी लेनी है. Dr. Shahzad has been very generous and very kind. You made yourself available today. But thank you so much. And I'm going to try कि जो बाकी biology related questions होंगे मैं उनको direct कर सकूँ Zain की तरफ. I think Zain is equally experienced. You know, she mentioned that she's here till maybe last 10 years. She did her undergrad here, then she did master here, and she's PhD student for last 4 years, and she will be graduating hopefully this year, inshallah. This must be Zain's 10th year at LUMS. So again, yes, I passed my 10th year. वो Zain है. बिल्कुल सही. Thank you so much, Dr. Shahzad.
Okay, thank you very much. Thank you very much. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Zain, आपकी तरफ आता हूँ मैं. What kind of course modules do the MS Biology program offers? This is a question being asked by Ehsan. कि कौन-कौन से modules होते हैं MS Biology में? So what happens is कि जब आप MS में induct करते हैं लोगों को, you don't really know कि उन्होंने अपने undergrad में कौन से courses किए हैं. So you have some basic level courses, molecular biology, biochemistry, जो कि आपने पहले साल के अंदर लेने होते हैं. There's a fixed pattern almost, and there's a lab course that everybody has to take. And then there's because we want कि हमारे जो biologists हैं, they are not pure biologists, but they can also computational biology is something जो कि आप एक tool की तरह इस्तेमाल करते हैं. तो एक course जो है वो computational biology का भी आपके पास compulsory होता है. So you have a wide variety of courses that you can choose from, but you will have some core courses जो कि university thinks के इतनी basic level of knowledge हर master's graduate के पास होनी चाहिए. So they range from molecular biology, biochemistry to virology. बहुत different streams हैं आपके पास और एक lab course compulsory. And then in the second year you can choose your own जो भी आप जिस field की तरफ जाना चाहते हैं. Developmental biology में जाते हैं, cancer biology में जाते हैं, and then in the last year in the second year of course you'll be आपका ज़्यादातर जो focus होगा वो आपकी thesis के ऊपर होगा जिसके अंदर research है, and you will ask your own question and try to answer it. Exactly, bilkul. Thank you for thoroughly explaining this, Zain. Okay, so our Dr. Rahman, I have to come to you now. I have a question coming from our community, and the question is, please tell me how to take admission in MS Chemistry. I've done BS Chemistry. Will this MS lead to PhD? I think ये तो answer बड़ा clear है कि अगर if you complete your MS program at LUMS, this will definitely enable you to pursue a PhD program. So, but the rest of the question, if you if you have done BS from some other university, basically for MS we need 16 years of education and a minimum CGPA of 2.4 in your bachelor's degree. If you have this GPA, then what you need to do is you need to go to admissions.lums.edu.pk. Over there you register for your application, you apply at LUMS, and once you have done that, and then there is deadline. I guess the deadline is March 30th this year. So, and then you need to submit your documents probably by parcel. And after that, there are two tests in which you need to appear. The first one is called LGAT, which is more like a GRE journal type of exam. And then the other test that you need to appear in is our SBASSE subject test of chemistry. And that is more like GRE subject test, where we generally ask you questions which cover the undergraduate curriculum. Okay, and then these are the multiple choice questions. Okay, for the other part, if you do your MS from LUMS, can you go into PhD? Well, the short answer is yes. But the longer answer is yes. Once you graduate, you still need to apply, and you need to go through that process. You don't need to appear for the PhD admission test if you meet certain GPA in your MS. But yes, you can do a master's from here and then straight away go into PhD without having to give the admission tests. Okay, so all right, thank you. And I should also let you know, let our audience know that this time, owing to the circumstances that we are right now in, आपने अपना application जो है वो हमारे portal पे fill in करनी है, plus all the documents that you will be providing to us. Previously you used to send us parcels and couriers. This time we won't be accepting that, so आपने make sure करना है कि within the stipulated deadline, and I'm going to let you know the deadline for our program, आपने उसको online submissions करनी है अपने document की. So we will not be able to entertain any couriers this time. So having said that, Dr. Rahman, एक question आपसे और होगा कि अगर एक बच्चा या एक applicant जो हमारे पास हैं जो कि LGAT अगर नहीं देना चाह रहे, तो कौन सा टेस्ट इसकी जगह पे हो सकता है? GRE जनरल? जी, अगर बच्चा LGAT नहीं करना चाहता तो फिर GRE जनरल के लिए उसको अपियर होना होगा, और GRE जनरल में जनरली हमारा जो कट ऑफ है वो 300 है. सो आपका क्वांटिटेटिव और वर्बल में मिला के 300 स्कोर होता है, तो वो हम फिर उसे एक्सेप्ट करते हैं एज अल्टरनेट टू LGAT. जी, if you have done international GRE by ATS,
आपका स्कोर 300 से नीचे है, you will still need to appear in our LGAT. Okay, all right. Thank you for this clarification. और इससे related मैं आ जाता हूँ रिदा आपके पास। थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप याद करें अपना टाइम। वैसे तो अब उस बात को, जाहिर बात है 2 साल के करीब तकरीबन हो गए हैं। आपका टेस्ट कैसा हुआ था? टेस्ट आई वुड से LGAT तो pretty simple होता है, उसमें तो इतना मसला नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट टेस्ट में मुझे लग रहा था कि it was not that good जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। बट देन अगेन उससे फिर हमें ये भी आइडिया होता है कि सारा फोकस सिर्फ टेस्ट पे नहीं है, सारा फोकस सिर्फ जीपीएस पे नहीं है, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट्स, आपकी रिकमेंडेशन लेटर्स, एवरीथिंग मैटर्स। सो अगर किसी का कोई एक वीक पॉइंट है, दे कैन कवर इट अप। तो इतना ज्यादा सिर्फ एक पॉइंट पे अपने सिर्फ वो स्ट्रेस करते रहें कि नहीं हम तो टेस्ट में अच्छा ही नहीं परफॉर्म कर सकेंगे। तो डू योर बेस्ट, मगर बाकी भी बहुत से फैक्टर्स हैं which will be considered in you getting an admission. I think I can add, Amar. So yes, passion or merit, these are the two things that we care for in the department. And then yes, academic background matters, the performance in the tests, both LGAT and subject test matters. But even then, if we are not very clear about certain candidates, even for the MS, we have the opportunity to invite them over for an interview and see how these students are and how well will they gel with our programs. So at the end of the day, जी. मैं एक्सप्लेन भी ये करना चाह रहा था, जैसे रिदा ने भी एक्सप्लेन किया, जैसे डॉक्टर रहमान आपने भी कहा कि अगेन वी टेक अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच व्हेन वी आर इवैल्यूएटिंग योर एप्लीकेशन। सो इट्स, जैसे डॉक्टर शहजाद भी अभी कह रहे थे कि इट्स नॉट लाइक दिस कि अगर आपने एक जगह पे परफॉर्म नहीं किया तो हम आपको वहीं पे जो है अपना वहां पे रिजेक्ट कर देंगे। नहीं, वी विल बी मेकिंग श्योर दैट वी आर फैक्टरिंग इन एवरीथिंग दैट कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट और कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर एप्लीकेशन। तो मेक श्योर कि आप अप्लाई करें। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपनी ऑडियंस को, अपने एप्लीकेंट्स को भी, कि आप बजाय इसके कि वेट करें, सबसे पहले अपना अकाउंट बना लें हमारे एप्लीकेशन पोर्टल पे, एंड देन यू कैन लर्न अबाउट the different processes, the different requirements that are there to apply to our program, both MS Chemistry and MS Biology, और कोई भी अगर जो भी प्रोग्राम आपको suitable है हमारे स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग से। अब जैन आपके पास एक क्वेश्चन से लेके आता, दैट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम रोशान एंड ही इज आस्किंग, कैन आई अप्लाई एज अ ट्रांसफर स्टूडेंट? सो इन माय अंडरस्टैंडिंग अ ट्रांसफर स्टूडेंट वुड बी के किसी एक स्टूडेंट ने एमएस के लिए अगर साइन अप किया किसी और यूनिवर्सिटी में एंड दे कंप्लीटेड अ सेमेस्टर देयर, would they be eligible to apply to our MS then, or to move? Amar, I think there are some cases, a few cases जिनका मुझे पता है कि जिसको एक आधा बच्चा जिसने ट्रांसफर किया है, बट वो एक बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के लिए आई थिंक होता है, और यू हैव टू बी रियली convincing as a candidate for the school to consider you as a transfer student. But I think Dr. Rahman will probably be able to guide you better about this. Gee, I guess transferring is more common in the BS program at LAMS, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा हमें एग्जांपल्स MS में नहीं मिलती। MS में क्योंकि टाइम भी थोड़ा होता है, 2 साल है, उसमें से भी एक आधा साल अगर बच्चा कहीं और लगाया है तो उसको फिर कोर्सेज कवर करना, उसकी इक्विवेलेंस लेना, वो थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि हमारे पास फ्रेश बच्चा आया है MPS करके, सो उसको अपने पूरे सिस्टम से, पूरे करिकुलम से भी पास करें और फिर उसको एनफ टाइम दें रिसर्च में इन्वॉल्व होने के लिए, ताकि उसके ये जो 2 साल हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में SSC में, वो एक रिच एक्सपीरियंस हो उसका। बिल्कुल बिल्कुल सही। Our next question is from Ariba, and Ariba asks, what type of career options can I look forward to after completing the MS Biology program? Zain, आपकी तरफ naturally. So MS Biology का बाद जितने ज़्यादा अभी तक लोग जो going by history वो यही है कि they've gone on to do PhDs, most of them. Some of them have opted to be teachers at different lecturers in different universities in Pakistan. लेकिन जो ज़्यादातर trend है वो यही है कि they've gone on for higher studies abroad, PhD करने के लिए, and then some of those people have also graduated with their PhDs and now they're doing postdocs in America or in Europe, or they're part of some industry, for example, Genentech or Roche, or research-oriented companies that exist outside of Pakistan. Unfortunately, Pakistan mein, because we don't have बहुत ज़्यादा research वाला माहौल, we don't have those industries in Pakistan. So either if you stay in Pakistan, your options primarily are academia at both levels, at higher secondary level and at junior levels as well. And
The other is कि आप अपना कोई research start कर दें at some institute, for example, University of Lahore में we have a graduate who's working there, but primarily most of them have gone on for PhDs. Okay, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ज़ैन। फहद हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, is it necessary to have work experience before joining the PhD chemistry program? If so, how long should it be for? मैं डॉक्टर रहमान नेचुरली आपके पास आऊँगा इस पे। जी, no, we don't need any work experience for you to join the PhD program. We just need your academics credentials. अगर आपने prior research की हुई है MS में, that is a plus point, but we don't look for any specific experience. We just need to have see the candidates with good credentials. Okay. So no experience required. बिल्कुल सही। रिदा, ऑनलाइन लर्निंग का एक्सपीरियंस आपके ख्याल से कैसा रहा है लम्स में? ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आप लैब का सारा सिचुएशन कैसे मैनेज होती थी ये सारी सिचुएशन में जब हम कोविड-19 में थे? I think it has been a lot better than a lot of other places that I heard about. क्योंकि सारे instructors invested बहुत ज़्यादा थे. They knew it was a big challenge to shift everything online. मगर they really did really well. All the courses में अगर हम उनकी effort देखें उस लिहाज से everything had to be replanned, और we had an online LMS जहाँ पे हमारे exams और सारा कुछ conduct होता रहा है. So facilities were provided. So it went a lot better than I expected. वैसे तो जो online के challenges होते हैं they still existed, मगर जितना सारे कर सकते थे उसका अच्छा, it was a lot better than what it could have been. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर रहमान, आपके पास एक क्वेश्चन के साथ आ रहा हूँ। हाउ इंटेंसिव वुड द रिसर्च बी इज बीइंग आस्क्ड बाय जवाद? तो अब आप काइंडली एमएस लेवल और पीएचडी लेवल दोनों को सामने रखते हुए को आंसर कीजिएगा। जी, I think we want to work on good projects, quality projects, and for that we need the students to spend time over there. Often what happens is कि जो बच्चा नया आता है, खास तौर पे जो हमारा MS का एक्सपीरियंस है, BS में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च नहीं होती, ठीक है? सो उसने आके रिसर्च यहाँ पे ही सीखनी होती है। सो उसमें उसको वी रिक्वायर कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करे, अपना टाइम लैब के अंदर स्पेंड करे, ताकि उसकी प्रायर जो कमियां हैं वो भी पूरी हों, और आपके पास सिर्फ 2 सेमेस्टर हैं, सो टाइमली मैनर में रिसर्च को भी कुछ आउटपुट भी वो ऑब्टेन करे। सो we do want student to spend considerable amount of time in lab. बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि अगर आप अपना एमएस या पीएचडी प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं तो काफी ज्यादा टाइम आपका लैब में स्पेंड होगा, तो फिर ऐसे होगा। And Amar, if I could add to that कि MS program में you don't need a publication to graduate. You have मतलब आपके जो objectives आपके supervisor ने आपके साथ set किए, आपने वो achieve करने हैं, but you don't need a publication. For PhD graduation, you do need a publication, and the publication that's accepted is international top tier journals के अंदर. It's not like कि आप किसी भी journal में publish कर सकते हैं. तो to have that quality of research, जिस तरह डॉक्टर रहमान ने कहा, you have to spend the hours. You have to put in the hours. Yeah. Okay, बिल्कुल। Thank you Zain, आपने बड़ा important point हमें बता दिया कि MS के लिए there is no publication requirement that we have established. Whatever you will agree with your supervisor, that will have to be completed to make sure that you graduate with the MS degree. लेकिन अगर आप PhD के लिए apply कर रहे हैं, PhD chemistry, PhD biology or any other program at SBASSE for that matter, आपको top 10 world publications जैसे Zain ने बताया उनमें से किसी एक में you need to make sure you have published a research article. बिल्कुल सही। Again, मैं अब आपके पास ही आ रहा था Zain, which test do I need to take to apply to this PhD biology program? It's the same. आपका एक LGAT 1 होगा जो कि general test होगा, and then you'll have an LGAT in biology. जो general है वो math and English है, and then the subject specific is biology के बारे में. Okay, so again, जैसे हम पहले बात करते कि 2 exams होंगे. One will be LGAT, which will be a general test, and the other will be the subject specific test. For that particular subject. So in this situation, it would be biology. Bilkul sahi. Our next question is from Majid. Majid asks, can I apply without test scores? I couldn't sit for the test, but I think he's referring to GRE. So Majid, your question, मैं आपका question खुद ही answer कर देता हूँ. You can take these exams on 11th April 2021. LUMS will be conducting these exams. अगर आप अपना GRE नहीं दे सकते,
and then you can sit for your LGAT exam and the subject specific exam as well. Okay, Dr. Rahman, आपके पास एक और question के साथ, how much do I have to score in my LGAT and SBASSE subject test to secure admission? I think there is no specific numbers that we can give. It all depends on the type of applicants who have applied, and then how they have performed in the exams. And of course, the performance also is affected by the rigor of the tests. So it's difficult to give any single number. What we want to see is we want to make a criteria out of all these academic backgrounds and performance in the test. And then out of that, instead of just setting up a line, cutoff line and pick all of those, we just want to pick the students who are at the top. बिल्कुल सही. लेकिन डॉक्टर रहमान एक और क्वेश्चन हमारे पास है. दिस इज अ बिट ऑफ टेक्निकल क्वेश्चन, मैं कह सकता हूँ इसको. इट्स बीइंग आस्क्ड बाय इशरत. इशरत सेज, does my current institution of education affect my chances of being selected at LUMS? मेरा ख्याल है she is referring to the institution that she did her bachelor's from. So I'm going to take your answer on that, and then Zan and Rida's as well. I don't think so. As long as the academic credentials are there, and then आपका institution आपका CGPA को तो इफेक्ट कर सकता है, लेकिन आप हमारे टेस्ट में क्या परफॉर्म कर रहे हैं बोथ LGAT में और GRE में, वो तो आपकी अपनी कैपेबिलिटीज हैं. सो आपका इंस्टीट्यूशन का फैक्टर वहाँ पे कवर हो जाता है. And we don't differentiate between different institutions. We want to get good students from everywhere. Zain, आपका क्या opinion है इस बारे में? बिल्कुल जैसे डॉक्टर रहमान ने कहा है, I've been here for so long and I've seen students from all over Pakistan, literally all over Pakistan, Gujarat, Rahim Yar Khan, Bahawalpur, Malakand, from all over Pakistan, getting into the MS programs, getting into the PhD programs, just because they did really well on their exams and during their interview. So we don't care कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, उसका क्या स्टैंडिंग है पाकिस्तान में या दुनिया में, as long as you as an individual are a brilliant student. Certainly, बिल्कुल. So again हम आपको evaluate करते हैं आपके credentials के ऊपर और आपकी काबिलियत के ऊपर जो और आपकी commitment के ऊपर. तो मेरा next question आपसे है Dr. Rahman, is there a way to still get admitted to the program if we miss the deadline? I doubt. मेरा नहीं ख्याल. डेडलाइन में अगर आप अप्लाई नहीं कर सके तो आई डोंट थिंक सो कि उसके बाद हम एक्सटेंशन देते हैं डेडलाइन की. If there is an official extension, then yes. But if there is no official extension in the deadline to apply for the programs, then no. So again, Amar, आप ही की बात है कि if you are interested in applying for our programs, don't wait for the deadline. Apply now. उसमें ये भी फायदा हो जाएगा कि आप जब अप्लाई करेंगे आपको पता चलेगा, उसमें लेटर ऑफ रिसर्च स्टेटमेंट लिखनी है, रिकमेंडेशन लेटर्स लेने हैं. सो अगर आप टाइमली मैनर में स्टार्ट करेंगे तो आप उनको अच्छे तरह से परफॉर्म करेंगे. जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन के आंसर पे आपको बताया है कि इंस्टीट्यूशन मैटर नहीं करते, आपका स्कोर मैटर करता है, GRE मैटर कर, आपका LGAT का टेस्ट मैटर करेगा, सब्जेक्ट करेगा. उसके साथ में हम आपका जो ये रिकमेंडेशन लेटर्स हैं और स्टेटमेंट्स हैं उनको भी पढ़ते हैं. ठीक है. एंड वी हैव द एबिलिटी टू इवैल्यूएट कि किस बच्चे ने मेहनत करके लिखा है और किस बच्चे ने बस सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे एक लेटर जमा करवा दिया हुआ है. सो आप टाइमली मैनर में अप्लाई करें ताकि आप इन पे प्रॉपर तरीके से फोकस करके एक अच्छी एप्लीकेशन जमा करवा सकें. वैसे डॉक्टर रहमान आपने शायद ये बात करके हैरान कर दिया सबका एकदम से. सब अब आई एम श्योर जो सीरियसली सोचे इस वक्त अप्लाई करने के लिए, दे आर आल्सो थिंकिंग ऑन द लाइंस कि हमने लिखना क्या अपनी एप्लीकेशन के अंदर. तो और ये बिल्कुल सही बात है कि हम पूरी तरह से उस चीज को इवैल्यूएट करते हैं. इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू अगर जैसे हम इंटरव्यू की अगर बात करें, वी बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो आपने लिखा हुआ है अपनी एप्लीकेशन के अंदर, हाउ वेल डू यू रेजोनेट विद दैट. तो डॉक्टर शहजाद भी यही बात कह रहे थे कि रिटन टेस्ट एंड व्हाट यू say in your interview, which basically is connected with what you have written in your personal application, all of these things are connected, and I mean all of this is going to be factored in when we will be evaluating your application. Again, we take a very holistic approach when we look at your application. मैं डॉक्टर रहमान आपके पास एक और क्वेश्चन के साथ हूँ कि what are the scholarships available to applicants applying to the MS Chemistry program? ये हमने पहले भी आंसर किया है इस क्वेश्चन को. well
एज सच MS केमिस्ट्री प्रोग्राम के अंदर 3 चीज़ें हैं जो जिनका एटलीस्ट मुझे पता है। एक तो जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए मेरिट स्कॉलरशिप होती है, उसके बाद NOP का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें सपोर्ट की जाती है, and then there is a financial aid scheme that is available to the students, which was earlier like a financial aid, but now it's more like a loan, interest-free loan that you get and then you have to return later on. And I think I should also add ke BS chemistry ke muqable mein the MS program is still subsidized. So hamare MS ke bache as compared to our BS students pay less of the fee per credit hour. Okay, बिल्कुल सही. Thank you, Dr. Rahman. I would also like to add that I did my MS on a scholarship. I didn't have the money to do a master's. मेरे सारे पैसे BS में खर्च हो गए थे. But I didn't have a master's के लिए पैसे, and I got a merit scholarship for 2 years. So आपके top performing students, if you do really well on your LGAT, तो आपको scholarship मिल जाएगा. So work hard on your application, work hard on your LGAT, and then you have to just maintain it for the next year. After GPA, if you are at the top of the class, you will get that scholarship again. Yeah. That's I think true. Another thing that matters over here is ke LUMS care for attracting the talent, और merit is what matters. ठीक है जी. तो जब आप अप्लाई कर रहे हैं, make sure कि अगर आप let's say you are even interested in financial aid or the loan, तो आप अपनी एप्लीकेशन को टाइमली तरीके से और प्रॉपर जो भी रिक्वायरमेंट्स मांगी हुई हैं वो प्रॉपर तरीके से सबमिट करवाएं. आई हैव बीन पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल एड कमेटी एंड एडमिशन कमेटी ऑफ द यूनिवर्सिटी एज वेल. सो वहां पे भी बाज़ औक़ात बच्चों का ये होता है उन्होंने डिटेल्स प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की होती या इनकम्प्लीट डिटेल्स होती हैं. सो मेक श्योर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर सम फाइनेंशियल एड फ्रॉम लम्स, तो आपको जो चीजें पूछी गई हैं वो प्रॉपर तरीके से टाइमली मैनर में आप सबमिट करवाएं. एग्जैक्टली ये बात तो हम बार बार इस पे काफी ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं कि आप एप्लीकेशन को जितना जल्दी हो सकता है स्टार्ट कर लें. पर जैसे डॉक्टर रहमान ने बताया है कि आप ने पूरे डॉक्यूमेंट्स देने हैं सो दैट वी आर इन अ बेटर पोजीशन टू एक्चुअली गेट एन आइडिया ऑफ द सिचुएशन विद रिगार्ड्स टू योर फाइनेंशियल इश्यूज व्हाट यू रियली इन. तो वो हमें बेसिकली अंडरस्टैंड करने में आसानी करता है और उसकी बेसिस पे हम ये देखते हैं कि आपको कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है. यहाँ पे I would like to reiterate that applying for financial aid is not going to affect your chances of getting in. बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये सोचते हैं कि अगर हम फाइनेंशियल एड में अप्लाई करेंगे तो शायद हमें एडमिशन ही नहीं मिलेगा. आपको एडमिशन पहले मिलेगा, आपका फाइनेंशियल स्टेटस बाद में डिटरमिन किया जाएगा. So just because आपने फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई किए, it will not affect your chances of getting in at all. बिल्कुल सही जैन. वी हैव अ नीड ब्लाइंड एडमिशन पॉलिसी हम फॉलो करते हैं. रिदा, मैं आपके पास ही आ रहा था. हमारे पास एक क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम आवर कम्युनिटी एंड अगेन वो ये पूछ रहे हैं फिर से हमसे कि जो स्टूडेंट लाइफ है वो कैसी थी. MS प्रोग्राम जो है वो कितना मुश्किल है. MS केमिस्ट्री प्रोग्राम आप काइंडली इसके साथ स्टार्ट करें और जो आप कमेंट दे रही थी काइंडली वो कंप्लीट कीजिएगा फिर. अच्छा, तो मुश्किल आई गेस डिपेंड्स ऑन हाउ यू अप्रोच इट. ठीक है, इफ यू आर पैशनेट अबाउट केमिस्ट्री, इफ यू लाइक डूइंग रिसर्च, तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है क्योंकि सारी अप्रोच बहुत कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है. फैकल्टी बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एंड देयर ऑलवेज अवेलेबल. आपको कहीं भी कोई मसला आ रहा है आप किसी भी इंस्ट्रक्टर से जाकर पूछ सकते हो. सीनियर्स हैं इधर, बहुत से लोग इधर हैं आपकी हेल्प करने के लिए. सो रिगर मैटर नहीं करता, आपका पैशन मैटर करता है, आपकी डेडिकेशन मैटर करती है. इफ यू आर पुटिंग इन द टाइम तो आपको किसी चीज में मसला नहीं होगा. और अगर एक्स्ट्रा करिकुलर और उस लाइफ के बारे में पूछना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली दैट एग्जिस्ट. अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो सोसाइटीज में तो देयर आर मेनी सोसाइटीज है और बाकी बहुत से ऑप्शन है. लाइब्रेरी है, जिम है, स्विमिंग पूल है. तो एक्स्ट्रा करिकुलर और वो वाली स्टूडेंट लाइफ भी दैट गोज along with everything else. लेकिन अगर आप केमिस्ट्री के लिए पैशनेट हो, रिसर्च के लिए पैशनेट हो, तो लम्स से बेहतर कोई जगह नहीं मिलेगी आपको पाकिस्तान में. फंडिंग पे आई वुड लाइक टू ऐड कि मास्टर्स में हमारे पास टीचिंग असिस्टेंटशिप्स और रिसर्च असिस्टेंटशिप्स भी होती हैं एंड दैट दे रियली हेल्प यू अ लॉट. मतलब मुझे भी अपने मास्टर्स के सेकंड ईयर में पूरा साल 20,000 रुपीज पर मंथ स्टाइपेंड मिलता रहा था. तो दैट बिकम्स अ सब्सटेंशियल अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर. सो वो वाली ऑप्शंस भी आपके पास हैं. सो यू नो, और लोन वाली भी डेफिनेटली है. अगर और कोई ऑप्शन नहीं है तो लोन तो आई गेस काफी इजीली स्टूडेंट्स को मिल जाता है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन माय क्लास आल्सो ऑन स्टूडेंट लोन्स. सो और वो पे करना भी नहीं है. यस.
बिल्कुल सही। मैं इस को बस एंड करूंगा और लेकिन मैं इस हमारे प्रोग्राम को एंड करने से पहले मैं सबके पास एक दफा आऊंगा ताकि वो हमारे एप्लीकेंट्स को कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें सब। डॉक्टर रहमान, आपसे स्टार्ट करूंगा। जी, if you are passionate about chemistry, if you really want to contribute something to the science, अब वाकई PhD के दौरान और मास्टर्स के दौरान लर्निंग ही नहीं करना चाहते बल्कि उससे आगे बढ़ के कुछ कंट्रीब्यूट भी करना चाहते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स को आगे पुश करना चाहते हैं, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की उसको प्रॉपर रटा बेस से हट के आगे कंसेप्चुअल बेस पे लेके जाना चाहते हैं, देन डेफिनेटली डू अप्लाई एट लम्स। और टाइम से पहले अप्लाई करना शुरू कर दें, डोंट वेट फॉर द डेडलाइन। उस वक्त रश भी ज्यादा हो जाता है पोर्टल के ऊपर, सो यू डोंट वांट टू वेट फॉर दैट टाइप ऑफ सिनेरियो, सेंडिंग ईमेल्स टू द एडमिशन कमेटी और एडमिशन ऑफिस के जी इस वक्त हम प्रेस कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, बटन सबमिट नहीं हो रही। सो ट्राई again, it's all about passion. If you are passionate for the science, if you are passionate for the chemistry, do come to LUMS. This is the place for you. बिल्कुल नोटेड। जैन, आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, जो डॉक्टर रहमान ने कहा है बेसिकली बात वही है, यू नीड टू सिट डाउन विद योरसेल्फ एंड हैव अ कन्वर्सेशन विद योरसेल्फ कि आप अपनी जिंदगी से क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर आपने सिर्फ बहुत ज्यादा पैसा कमाना है तो प्रोबेबली साइंस आपके लिए नहीं है। अगर आप एक ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए या एक पैशन टू लर्न टू अंडरस्टैंड द अननोन, अगर वो आपकी एक ड्राइव है, you want to contribute to the existing pool of knowledge, you want to give your contribution to that ever expanding, expansive universe of biology, chemistry, basic science, तो फिर आप अप्लाई करें। लेकिन बहुत जरूरी है कि ये आपको पता हो कि आपकी कमिटमेंट, आपकी डेडिकेशन रिक्वायर्ड होगी। कोई भी लाइक फ्री राइड नहीं है, जिस तरह रिदा ने भी बताया कि इट इजंट इजी, लेकिन फिर nothing worthwhile is ever easy. You have to strive for things that actually mean something in life. So exactly. Have that conversation with yourself first. True, बिल्कुल सही। रिदा, आप पे एंड इसको लास्ट आपका। I would say कि definitely number one is your passion for chemistry. If you are passionate about it, LUMS is definitely the best place for you. और दूसरी चीज जो आपको सिर्फ LUMS में मिलेगी मुझे लगता है, और that is very rare अक्सर यूनिवर्सिटीज में sadly, is a very highly invested faculty. मतलब जिस तरह सारे फैकल्टी मेंबर्स हमारे लिए ऑलवेज अवेलेबल होते हैं, वेदर इट्स विद और रिसर्च प्रॉब्लम्स या स्टडी प्रॉब्लम्स या करियर एडवाइस, और जितनी वो सारी हमारी हेल्प करते हैं इन द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर PhDs एंड एवरीथिंग, राइटिंग रिकमेंडेशन लेटर्स फॉर अस एंड रिव्यूइंग और SOPs, मतलब दे गो अबव एंड बियॉन्ड फॉर अस. So I am highly grateful to them for that, and we can never repay them for that. They go beyond the extra mile basically. So you know, you will definitely not regret your decision of coming to LUMS. Plus, the friendships that you will make here will go on for a long time. For example, Dartmouth में इस वक्त हमारे graduates, about 10 or 11 graduates are in Dartmouth right now. तो उनका वहाँ पे एक मिनी पाकिस्तान बना हुआ है. They're from different batches. कोई अंडरग्रेड से गया था, कोई पोस्ट डॉक के लिए गया है, कोई मास्टर्स के बाद गया है. But वहाँ पे just the fact that you are a LUMS graduate is a bond that connects you to so many people all over the world. बिल्कुल सही। Thank you so much, Dr. Rahman. Thank you so much, Zan. Thank you so much, Rida, for being with us, for making this conversation very fruitful, very interesting as well. I'm pretty optimistic कि हमारे जो applicants अब apply कर रहे होंगे, they are in a much better place with regards to filling in their application. We have tried to emphasize कि आप अपनी application को जल्द से जल्द fill करना start कर दें, जो आपको रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आप कलेक्ट करना शुरू करते हैं। जैसे जैन ने भी कहा कि यू शुड हैव अ कन्वर्सेशन विद योरसेल्फ, जैसे डॉक्टर रहमान और रिदा ने कहा कि यू नीड टू बी रियली पैशनेट, कमिटेड अबाउट व्हाट यू वांट टू डू इफ यू आर प्लानिंग ऑन अप्लाइंग टू एनी ऑफ द प्रोग्राम एट LUMS. And one thing that I have noticed over and over again, I have been doing multiple webcasts, I have been extensively engaged with students, graduate and undergraduate students, and one thing that I have found every time is that our students really respect not only the instructors but the university and the university's efforts in elevating the education standards in Pakistan, the research standards. And whatever we are doing, we don't have an impact that is limited to Pakistan, but we have a global impact as well. So yes, once again, agar aap committed hain, so please make sure you have started your application. And before we sign off, I'd like to remind you the last date to apply would be 30th of March. And आपने जो अपने exams देने हैं in connection with any of the programs offered at the MS and PhD levels,
The last date for that would be 11th April. So again, मैं आपको फिर press करता हूँ कि आप इस पे काम करना start कर दें. And we look forward to getting your application, evaluating it, and we look forward to seeing you at LUMS. Thank you very much for being a part of this webcast. We will inshallah see you tomorrow with our webcast for physics and mathematics at MS and PhD levels at SBASSE.